Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in theory of computation. Usual note के साथ शुरू करते हैं. TOC is all about language and corresponding converter. आज के वीडियो में ये हम लोग देखने वाले हैं. There's one machine, a very well-known machine before the Turing machine. That machine is known as Post machine, developed by Emil Leon Post in 1936. कंसेक्यूटिव ईयर्स में ये दोनों मशीन डेवलप हुए थे, पोस्ट मशीन एंड ट्यूरिंग मशीन. बट एज ट्यूरिंग मशीन इज अ वेरी वर्सटाइल मशीन दैट इज मोर adapted in theory of computation और computing technology, एंड पोस्ट मशीन के कुछ लिमिटेशन की वजह से पोस्ट मशीन इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि ट्यूरिंग मशीन है. बट डेफिनेटली पोस्ट मशीन इज गोइंग टू गिव यू सर्टेन एडवांटेजेस ओवर पुश डाउन ऑटोमाटा आल्सो. सो इस सेशन में डिस्कशन करेंगे पोस्ट मशीन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, व्हाट आर इट्स कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, एंड फॉलोड बाय पोस्ट मशीन कॉन्फ़िगरेशन. एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट मशीन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू टैकल द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मशीन. इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग मशीन जहां पे आपको पता चलेगा डेटा स्ट्रक्चर्स का कैसे यूज इन मशीन्स के साथ भी हुआ है. Right? So, chalo, let's go on to the discussion about how the post machine looks like, how it works, and what are its different configurations. So, we have seen that there are certain limitations against finite automata. Because of lack of memory, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो रेगुलर लैंग्वेज के अंदर फिट नहीं होते हैं, वो फाइनाइट ऑटोमाटा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. राइट? सो लेट अस सी लाइक हाउ पोस्ट मशीन इज गोइंग टू प्ले अ सर्टेन एडिशनल रोल टू एक्सेप्ट दोज लैंग्वेजेस व्हिच वर नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट विद फाइनाइट ऑटोमाटा. एंड फिर इसने कैसे मूवमेंट किया है, कैसे, what are the different hardwares that are used, what are the different memory structures that has been used, and in all it will be a very interesting discussion. So let's go with it's a post machine identified with the name as, इसका जो डेवलपर है that is Emil Leon Post. And in 1936, this particular machine was evolved, right? And this fellow has used additional memory over finite automata in the form of queues, right? So PDMA additional memory was in the form of stack, which is data structure says that it's a last in first out data structure. Queue के साथ we know that because we all have studied the data structures in a very descriptive way. So we know that queue के साथ what is the way out to work on the queue is first in first out, right? So it gives you additional memory, or you can say that this particular additional memory, ये concept अपने को ट्यूरिंग मशीन के लिए भी चाहिए. additional memory मतलब अपना जो टेप है, टेप मेमोरी, इनपुट टेप का मेमोरी is treated as queue, right? And we know that the queue is the data structure which works as what, first in first out, right? तो जो भी इनपुट अल्फाबेट्स हम लोगों को यूज करने हैं सारे के सारे किस पे रहेंगे, क्यू पे रहेंगे, राइट? ओके, एंड वी नो द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द क्यू. डेटा स्ट्रक्चर में this particular end is known as front end and this end is known as rear end, right? Okay, data जो queue में जाएगा, the direction will be something like this, and यहाँ से we can go on performing delete operation from front end, and probably इसको data structure के language में हम लोग कहते हैं DQ operation. And यहां से एलिमेंट क्यू के अंदर जाएंगे एंड दैट ऑपरेशन इज नोन एज इंसर्ट ऑपरेशन एट विच एंड, रियर एंड, एंड उसी ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एन क्यू, राइट? सो एन क्यू एंड डी क्यू. सो ऐसे दिखेगा अपना टेप.
जहां पे हम लोग डिलीट कर सकते हैं एंड वी कैन गो ऑन इंसर्टिंग द एलिमेंट्स इनटू इट। सो फाइनाइट ऑटोमाटा के जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, मतलब ब्लॉक डायग्राम जो है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे एंड लेट अस ट्राई टू सी लाइक हाउ पोस्ट मशीन लुक्स लाइक, एंड फिर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे with the help of tuples, right? So in this case I'll go ahead with this input tape is storing the input alphabets onto it, right? Okay, so this is input tape, right? Okay, suppose yahan pe hai a b a b a and b, and there is one special symbol which act as end of the string symbol. So that symbol sometimes it can be used as hash, and in some books you will find that is been used as z0. दोनों भी सिंबल, हैश कुछ बुक्स में दिया है, z0 कुछ बुक्स में दिया है, राइट? ओके, एंड मतलब इंसर्शन, ये this particular symbol is always indicating the rear end and this is the front end, right? Okay, so front end से हमेशा सिंबल क्या होंगे? रीड होंगे, एंड इस एंड में सिंबल हमेशा क्या होंगे? राइट होंगे। सो यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व, यू विल फाइंड टू हेड्स, one head to remove the symbol from the tape and one head is to insert the symbol on the tape, right? So this is a very major addition into finite automata diagram, right? Okay, now यहाँ पे सिंबल रीड करने के बाद as it is a automata machine, that means it is going to work on a state. ये भी state machines है, तो machine is in some state, it is right deleting the symbol from the tape, machine is in one state and then it goes on moving to the next state and some symbols are inserted or some symbols are written onto the tape. This is how it works, right? Okay, so ये जो है, this is how it is going to work. So now this particular block, we know that this is finite state control block, state control block. So working is very same. Machine is reading one symbol, मतलब वो delete करता है actually symbol from what? Front end, and it is in one state. Then it decide to go in the next state and some symbols are written. और right operation करना है, नहीं करना है, that also depends on certain strategy that we are going to see under the configuration. But the machine looks like this, and this input tape is in the form of Q, right? And it is going to work in the way as first in first out. And what is additional thing? ये machine में capacity है to write the symbols on the input tape, जो कि पहले दोनों मशीन में कैपेसिटी नहीं था। मतलब फाइनाइट ऑटोमाटा इज आल्सो यूजिंग वन रीड हेड एंड पुशडाउन ऑटोमाटा इज आल्सो यूजिंग ओनली द रीड हेड, रीडिंग का कैपेसिटी था। इस मशीन में एडिशनल कैपेसिटी देखो, दिस मशीन कैन बी एबल टू राइट सर्टेन सिंबल ऑन द टेप depending on the need of problem solving, right? So in all, this is going to give you more versatile operations to perform for acceptance of languages, right? और एक चीज, why this post machine is giving additional benefits over the PDA? Because आप Q को यूज करके स्टैक सिमुलेट कर सकते हैं, उसका एक एंड बंद करके, राइट? बट यू कैनॉट सिमुलेट Q's by using stack, क्योंकि stack ये डेटा स्ट्रक्चर है, वो हमेशा ओपन एट व्हाट? वन एंड रहता है, उसको आप ओपन एट बोथ द एंड्स नहीं कर सकते। सो पोस्ट मशीन के थ्रू हम लोग पीडीए को सिमुलेट कर सकते हैं, बट पीडीए के थ्रू वी कैन नॉट सिमुलेट व्हाट? पोस्ट मशीन। दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। सो दिस पोस्ट मशीन विल ऑलवेज हैव एडिशनल कैपेसिटीज एज कंपेयर टू पुश डाउन ऑटोमाटा, राइट? ओके, सो देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है। Definitely this particular machine has got finite automata का all possibilities. So इसके ऊपर Q का insertion is there. So let us try to see how it is represented, and it is represented with a very similar tuples as that of PDA. So post machine is represented with 7 tuples, that is Q sigma, right? Okay, ये टाउ सिंबल हम लोगों ने पीडीए के टाइम पे देखा था, दैट वाज इंडिकेटिंग एट दैट टाइम इट्स अ स्टैक सिंबल, यहाँ पे इंडिकेट करेगा इट्स अ क्यू सिंबल, राइट? ओके, एंड देन वी हैव डेल्टा, then initial state, then we have final state, and then we have
Z0. So यहाँ पे Z0 was indicating at that time empty stack symbol. यहाँ पे Z0 will indicate what? It's a end of the queue symbol, right? Okay. So यहाँ पे let's see. We know this queue is finite set of states. Next is sigma is input alphabet. So finite set of input alphabets. Next is tau symbol, right? This can be treated as finite set of q symbols. राइट ओके सो क्यू सिंबल में मतलब उस स्टेप को ट्रीट करेंगे एज अ क्यू तो उस स्टेप पे क्या क्या रह सकता है मतलब कैन आई से दैट माय दिस इज सिग्मा का यूनियन विथ इप्सिलॉन का यूनियन विथ Z0 एंड दिस विल ऑल बिलोंग्स टू व्हाट टाउ मतलब इस स्टेप पे अपना सिग्मा मतलब इनपुट अल्फाबेट्स भी रहेंगे इसमें इप्सिलॉन भी रह सकते हैं इसमें Z0 टू इंडिकेट दैट एंड ऑफ द क्यू सिंबल वो सारे के सारे इस पे रहेंगे राइट नेक्स्ट टू दैट Q0 इज माय ऑब्वियसली स्टार्ट स्टेट एंड इसके लिए लिखेंगे Q0 बिलोंग्स टू Q नो डाउट राइट ओके F इज दिस इज आवर फाइनल स्टेट बट यहाँ पे उसको फाइनल स्टेट करने कहने की जगह पे पीडीए में पोस्ट मशीन में ट्यूरिंग मशीन में मोर प्रोमिनेंट वर्ड एक्सेप्टेबल वर्ड इज हॉल्ट स्टेट मतलब मशीन यहाँ पे रुकने वाला है यहां से आगे वो नहीं जा पाएगा machine is halted it is not able to take any new inputs so this is halt state so this halt state can be a subset of q more than one halt state भी रह सकते हैं और एक halt state भी रह सकता है right okay and ये हुए अपने टपल्स and next one is Z0 so this Z0 indicates end of q so ये हमेशा दिखाता है rear end right so this is how the things works right okay now these are the 6 tuple let us try to understand heart of the machine matlab delta kaise work karta hai right so what I'll do is I'll take this entire definition at this side and then we'll be able to write okay and here we'll go with understanding of delta right okay so delta is going to work like it's a state transition function कैसे वर्क करता है so it will be able to do some operations like machine is in present state right okay हाँ so front end से एक symbol delete होगा delete from front end right okay and then this machine is going to decide to go to next state and यहाँ पे insert at rear end right okay so this is how the delta looks like machine is in the present state it decides to delete the symbol from the front end and then machine goes to next state and it insert the symbol at the rear end right okay अभी इस deletion में and इस insertion में दो possibilities हो सकते हैं मतलब पहला possibility है no deletion and second possibility is deletion मतलब ऐसे भी हो सकता है कि कुछ टाइम में हम लोग सिंबल डिलीट ही ना करें सिर्फ हम लोग इंसर्ट करें और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इस मशीन में आपको दिखेगा इस वजह से इसके 4 कॉन्फ़िगरेशंस हमको आगे देखने हैं राइट ओके एंड यहाँ पे भी इंसर्शन के लिए 2 ऑपरेशन वन इज नो इंसर्शन एट रियर एंड एंड सेकंड वन इज इंसर्ट एट रियर एंड इंसर्शन राइट तो इसकी वजह से कितने पॉसिबिलिटीज हुए प्लीज सी नो डिलीशन नो इंसर्शन एक पॉसिबिलिटीज नो डिलीशन इंसर्शन दूसरा पॉसिबिलिटीज डिलीशन बट नो इंसर्शन तीसरा पॉसिबिलिटीज डिलीट सिंबल एंड इंसर्ट सिंबल चौथा पॉसिबिलिटीज तो ये आएंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंडर बट
पोस्ट मशीन लुक्स लाइक दिस इन ऑल ए वेरी इंटरेस्टिंग मशीन, जहां पे हम लोग क्यू के साथ काम करेंगे टू सॉल्व लॉट मेनी प्रॉब्लम्स एज दैट ऑफ पीडीए। पीडीए के सारे प्रॉब्लम्स इसमें से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what are the different four configuration that are possible with respect to post machine, right? तो पहला है configuration, please see Q and A, and this gives me Q and B, right? Okay, so यहाँ पे I'm in a state, right? So this is delete A from front, right? And this is insert B at rear end. तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ जहां पे फ्रंट एंड से डिलीशन भी किया, इंसर्शन भी किया, राइट? और एक सेकंड कॉन्फ़िगरेशन इसका हो सकता है, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा ऑफ Q and A produces, let us say, Q and epsilon. So this gives me delete and this is don't insert. ऐसा पॉसिबिलिटी होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी डेल्टा ऑफ Q epsilon gives me Q and B, something like this. So this says don't delete and यहाँ पे insert, right? Insert at rear end, right? And last possibility, ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर रहता है, बट एज वी आर डिस्कसिंग द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज वन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन दैट पोस्ट मशीन में एक्सपीरियंस, राइट? ओके, डेल्टा ऑफ Q epsilon produces Q epsilon. So it says that don't delete and यहाँ पे don't insert, right? So the delta looks like this, right? So यहाँ पे जो पेयर है वहां पे मशीन इज इन द प्रेजेंट स्टेट, द डिलीशन मतलब डिलीट जो हो रहा है सिंबल, फ्रंट एंड का जो सिंबल है वो सिंबल को इंडिकेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे मशीन गोज टू नेक्स्ट स्टेट एंड जो सिंबल है वो इंसर्ट हो रहा है या नहीं इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, राइट? ओके, ये अगर क्लियर है तो हम लोग बहुत स्मूथली मूव कर सकते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन, right? Okay, I hope कि this machine is going to play a very interesting role in your TOC study, right? अगले सेशन में मिलेंगे with the problems to be solved with the help of post machine, and you will enjoy definitely working with the post machine, that is for very sure. So that's it for this session. Thanks for the watching. Keep studying. Thank you very much.